So today's question is why people fail in Afcat examination, or rather, this can be applicable for any of the examination, guys. I have closely experienced it, and I'm talking with an experience right now, though. So listen it carefully. Fine. Now there are some specific points why people are not able to clear any competitive exam. Majorly, I will be talking about Afcat examination, right? So look, सबसे पहले lack of clarity. They don't know about themselves कि what subject they know, or rather for example AFCAT चार topics है: English, GK, mathematics, reasoning. Now these people don't know what is their strength, what is their weaknesses. Now the moment when you start realizing what is your strengths and what is your weaknesses, and that's not it, okay, you have to work upon your weaknesses also. Now it is not also कि यार last 10 बच्चे हैं आप and then you are working on your weaknesses. No, that is also not a point. Now we have say approximately 2 months, right? Yeah, मतलब 50 दिन है हमारे पास. So at this time you can definitely work on the fact that what are your weaknesses, but also you should be like thoroughly knowing about the strengths. Like for example mathematics, even if you present like I'll tell about myself. Fine, even if you present those 18 questions at this moment, though I have not prepared for mathematics, I'm confident that 10 12 questions मैं आराम से लगा लूंगा. So that is the amount of confidence I have. Do you have that in you? With that, for like कितने मतलब जैसे mathematics, if you have mathematics as your strong point, so if you have that much of confidence, then you can go for your weaknesses. But I would suggest for people to go for their strengths, उसको और पॉजिटिव करो और उसको निखारो. सो पीपल डोंट नो अबाउट देमसेल्फ. दे स्टडी एवरीथिंग कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, एंड देन दे गो studying 50% of each subject. Eventually they don't clear the examination. So that is the thing why they not clear the AFCAT exam. First point. Second point is, what happens is, AFCAT is an examination where you need strategy. Now I'll tell you, a poor idea with a very good strategy always works. But a very good idea with a poor strategy will never work. That's for sure. And AFCAT is a kind of examination, guys, जहाँ पर अगर आपकी नॉलेज नहीं है बट चलेगा, बट आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए. द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट लाइक यार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना, दैट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग. एनीथिंग कैन लाइक दैट इज द मोस्ट बेस्ट थिंग. लाइक यार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यार. नो वन इज गोइंग टू कम टू यू एंड आस्क यू कि जीके के कितने क्वेश्चंस किए आपने. नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दैट. बट हेंस अब इस टाइम पे यू हैव टू स्टडी दैट ऑल्सो. एंड ऑल्सो GK में you have to study specific topics. You have to analyze things. Go for PYQs. People don't go for PYQs. Don't know why they don't go for PYQs. That's the second reason. Third reason is, while they are preparing, they don't know from where to study. They have lack of knowledge कि from where to study. Even if they get कि यार मैं इससे पढ़ना चाहता हूँ, ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, ये एडुकेटर फॉलो कर रहा हूँ, ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूँ, after some time they feel कि यार that is not sufficient, or some doubt will come, some this that blah 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 will come, and they will change it. This happens regularly till the last moment. You are not deciding which from where to study. That's the thing. I told you कितने बार बोला है मैंने कि I am studying with this mathematics की book for past 2 years. ना ये CDS की बुक है, AFCAT की नहीं है, बट मैं AFCAT क्लियर कर रहा हूँ इस बुक से पढ़ के. नाउ आई नो फ्रॉम वेयर टू स्टडी. I majorly follow 2 or 3 YouTube channels. I majorly have taken 3 or 4 subscription, but I have not studied with that. ठीक है, you know the reason. So that's the thing, guys. You have to know. For example, यार, I'll tell you my example. There are a lot of people who used to follow me. Now they don't follow me. Now why they don't follow me, I don't know. God knows. बल्कि I'll tell you, try to watch my geography videos, guys, and try to compare it with any of the educators. I'll tell you, my quality of content is best than them, better than them. I'll tell you, क्योंकि मैंने ना यार, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, और आई एम नॉट डूइंग इट फॉर व्यूज, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीथिंग एल्स. I have faced this problem 3 years before. That's why I want to correct it. I want to help people. That's why I'm doing this.
आज भी हर रोज वीडियो दिए है मैंने, क्योंकि आई हैव दैट इंटरेस्ट, आई हैव दैट आई वांट टू डू समथिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एक हफ्ता देख लिया, छोड़ दिया, चेंज कर दिया, ऐसे दल बदलते रहोगे ना तो कभी जंग नहीं जीती जाती। फाइन, इफ यू आर स्टिक ना, आई एम नॉट टेलिंग यू स्टिक टू माई चैनल ओनली गाइज, आई हैव नेवर सेड दिस कि स्टिक टू माई चैनल ओनली। search for plenty of the options, like you have a lot of आपके कितने चैनल्स है जो कि एफकैट के लिए पढ़ा रहे हैं, एफकैट सर्च करो, 150-200 चैनल्स आएंगे आपको, गो फॉर इट, देखो आपको कहाँ समझ में आता है। मैं अपना चैनल का प्रमोशन इसलिए करूंगा क्योंकि मैं अपने चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बार मेरे को भी अपॉर्चुनिटी दो, गो एंड वॉच माई जियोग्राफी वीडियोज, गो एंड वॉच माई इंग्लिश वीडियोज, एक बार देखो उन सबको एंड देन ट्राई टू जज मी कि मेरे साथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो चीज़ करो। पीपल चेंज देयर एडुकेटेड, पीपल चेंज देयर बुक्स। मेरे फ्रेंड के पास 100 बुक किताब है, 100 नहीं, 4 किताब है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में 18 में से वो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मुश्किल से लगाता है। देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग फ्रॉम एवरी सोर्स, गेटिंग नथिंग। रादर स्टिक टू वन थिंग एंड स्टडी एवरीथिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, ये तो चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट इज lack of confidence. They don't have simply any confidence that they are going to clear it. Guys, confidence will come to those people who are prepared. You have to understand that point. Fine, until unless you are not prepared, you know what, you will not get that confidence. If you go on a race where you are competing with a Usain Bolt and you have not practiced even a thing, you will not, definitely not get that confidence. You will get that confidence that you will definitely lose that race. That's the thing. So I'm just like, may try to explain you with an example, but the fact is, having confidence is the very utmost thing. Now confidence मतलब तभी आएगा जब आपने प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं प्रिपेयर किया तो नहीं आएगा। दैट्स द थिंग। लास्ट पॉइंट इज, people are afraid of this competition, people are afraid of this crowd, people are afraid of exposure। ठीक है, so that is a very good point। I have explained it in a detail in my previous videos, in my previous video, link description में दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, सो यार पीपल आर अफ्रेड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, क्राउड। मेरे साथ भी होता था, बहुत बार हुआ है, अभी भी होता है कभी कभी, बट इट्स गुड। बट ओवर शैडो कर देना उस चीज़ को, लाइक इट शुड नॉट कम एंड हॉन्ट यू अगेन, दैट्स द फैक्ट। फाइन, सो दीज आर माई छोटे, लाइक 4-5 चीज़ें मैंने एनालाइज की थी, दैट्स वाई आई वाज सिटिंग हियर। एंड यू स्टिल हैव टाइम, यू गाइज, यू स्टिल हैव टाइम टू prepare for AFCAT examination, make your best strategy guys। I'll tell you, अगर मेरे को इन 4-5-6 ऑप्शन में से भी, मतलब जो मैंने बताई थी उसमें से 2-3 छाटना है, तो do not ever change your educators। that is the most important thing guys। क्योंकि I'll tell you, मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके हैं और 4 टीचर्स 4 तरीके सिखाएंगे। आप वही 4 तरीके चारों देखोगे ना, you will come up with the 5th method and eventually you will never get the answer with that 5th method। fine, so that's the thing। इसलिए you ask anyone यार, you should not never change your educator। if you are studying polity from this educator, stick to that educator, whether even if he is teaching you wrong, stick to that educator only। क्योंकि यार you have trusted him, if you have started with him, end with him also, and then when you have ended it, then you can change the educator। now I have seen people कि यार साइंस में एक चैप्टर इससे पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर इससे पढ़ लिया, चौथा तीसरा चैप्टर उससे पढ़ लिया। I want you to make that strategy so that you should not lose confidence। fine, so with that note guys, I think मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, सब्सक्राइब, बिकॉज आई एम कमिंग अप विद डेली वीडियोज। आई वॉन्ट एन अप्रिसिएशन फ्रॉम यू एंड आई शुड गेट इट, आई गेस। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।